Hello students, let's continue our chapter first of civics. What is democracy? Why democracy? We will discuss today the topic why democracy. Why democracy system has been adopted in different countries of the world. Next topic is argument against democracy. In this topic we will discuss about the routinely complaints which are heard in many democratic countries. The next topic is argument for democracy, means the merits of a democratic system. Why democratic form of government is better than any other form of government. And then last topic is broader meaning of democracy. So let's start the explanation with the help of slides. So students, let's start explanation of the topic why democracy. Why this democratic system has been adopted by different countries of the world. Why this form of government is regarded as the best form of government. Some peoples are against this democratic system. The reason behind it are: first one, leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. Elections are held in every 5 years in democratic system. If the last leader may be very good and he has adopted various methods for the development of the country, but the leader of the next election who has won the next election may not be seen. He may change the policies which were adopted by the last government. So there is a changing system in a democracy. This leads to instability. तो इसकी वजह से क्या होता है? Instability जैसी situation आ जाती है. और कई बार जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, उनमें भी कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं. इसके वजह से भी इंस्टेबिलिटी होती है सिचुएशन के अंदर. जैसे प्रेजेंटली दिस इज हैपनिंग इन द राजस्थान. सेकेंड रीजन इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. तो कंपटीशन तो होता ही है. यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच में होता है? सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में. वेरियस पार्टीज आर doing the best and adopting the best method to win the election, and the powerful party which is more powerful than other parties always wins the election. There are less chances of the party which is less powerful. There is no scope of morality. और यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई मॉरलिटी का स्कोप नहीं है. यहाँ पे मॉरल वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं है. यहाँ पे सिर्फ जो strong persons होते हैं, they win the elections. Many people has to be consulted in the democracy that leads to delay. Yes, this is happening in democratic system. यहाँ पे बहुत long process है. Many persons have to be consulted to take the decision. A single leader like a dictatorship government cannot take decision at a time. He cannot take decision. First the leader or the government has to consult other members of the parliament, then he can take decisions. So many times the decisions are delayed. Elected leaders do not know best interest of the people. Sometimes such leader is elected with the leader do not know anything about the political situation of the country, how the country can be developed, which methods can be adopted for the development of the country. कई बार ऐसे leaders elect हो जाते हैं जैसे लालू प्रसाद यादव. उनको कुछ नहीं पता कंट्री में कैसे कंट्री का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है. तो ऐसे लीडर्स इलेक्ट होने के बाद में वो सोच ही नहीं सकते कि कंट्री के पीपल का बेस्ट, कंट्री के लोगों के लिए बेस्ट मेथड्स कैसे अडॉप्ट करें. तो दिस लीड्स टू बैड डिसीजन. इसके कारण कैसे डिसीजन अप्लाई होते हैं? बैड डिसीजन. तो अपनी मन मर्जी से जैसा चाहे वो करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस democratic system, some persons are against the democracy. Now we will learn about arguments for democracy. Why democratic system is best form of government. The first reason is a democratic government is better government because it is more accountable form of government. In a democratic form of government, the government has to give answer to the people. If any decision is taken, then he has to give reasons to the people why that decision has been taken. The peoples of the country, the citizens of the country can ask question to the government. So it is more accountable than any form of government. Second reason is democracy improves the quality of decision making. Here decisions are taken by consulting many people, but
The decisions are sometimes delayed, but proper decisions are taken. कि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन होते हैं, जैसे मेंबर्स होते हैं पार्टी के और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, उन सबसे कंसल्टेशन करके बाद में डिसीजन लिए जाते हैं. तो डिसीजन लेने में डिले तो हो जाती है, पर बेस्ट डिसीजन लिया जाता है. जो सही है डिसीजन वही लिया जाता है. सो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. In any country, people may have differences in opinion and interest. These differences can particularly seen in a country like India, because in India there are people of different religion, speak different languages, practices different religions, and have different castes. So differences may be there, but these differences cannot be long. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is permanent winner and no one is permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. तो ऐसे ही जैसे हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग कास्ट के पर्सन्स है, तो ऐसा नहीं है किसी भी एक कास्ट के पर्सन्स को, किसी एक रिलीजन के पर्सन्स को प्रेफरेंस दी जाती है. ऑल आर इक्वल and the decisions of all the members are listened. The conflicts between different religions are solved peacefully. Next point is democracy enhances the dignity of citizens. Democracy is based on the principle of political equality. Here, poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. There is no differences between the citizens of the country, चाहे वो poor हो, rich हो, educated हो या uneducated हो. All the persons are treated equally in the country. So democracy enhances the dignity of the citizens. Next one is democracy allows us to correct its own mistakes. There is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जहाँ पे मिस्टेक्स नहीं हो सकती. But the advantage of democracy का क्या है एडवांटेज? In such mistakes cannot be hidden for long. ऐसी मिस्टेक्स अगर कोई मिस्टेक्स हो रही है तो वो लंबे टाइम तक डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं छुपाई जा सकती. Either the leader had to correct it or the leader has to lose the rule. या तो वो सही करेगा या फिर उसे जो लीडर है वहां से हटना पड़ेगा. गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलती करता है तो उसे वहां से हटाया भी जा सकता है. सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. के डेमोक्रेसी कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, बिकॉज डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया. इंडिया में अडॉप्ट किया गया है, पर अभी भी इंडिया के अंदर पॉवर्टी जैसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाया. ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है. तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, पर ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे. टॉपिक इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. The most common form that democracy takes in our time is that of a representative democracy, where majority is allowed to take decisions on behalf of the all. कि ये एक ऐसा कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. बहुत सारे पीपल है कंट्री के अंदर, लेकिन उनके बदले में एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं. क्योंकि country like India is most populated and here all the people cannot take decisions. Some representative had to be elected to take decision. The majority of the people rule through their elected representative. यहाँ पे majority of the people मतलब जिसको हमने elect किया है, majority of the people rule through their elected representative. जो हमने इलेक्ट किए हैं रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किए हैं वो रूल करते हैं हमारे बिहाफ पे, वहां पे जैसे पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर. अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन एंड द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन. डेमोक्रेटिक डिसीजंस क्या होते हैं? डेमोक्रेटिक डिसीजन ऐसे होते हैं जिसके अंदर सबकी कंसल्टेशन दी जाती है, सबकी कंसेंट ली जाती है. जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये कुछ टॉपिक पे डिस्कस करते हैं
जब मीटिंग्स होती है विधान ये पार्लियामेंट हाउस का सेशन होता है, उस टाइम पे वहाँ पे हर एक जो मेंबर्स होते हैं वो कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, उसके फेवर में बोलते हैं, उसके अगेंस्ट बोलते हैं। कुछ मेंबर्स उसके फेवर में, किसी बिल के फेवर में होते हैं, कुछ मेंबर्स उसके अगेंस्ट में होते हैं। तो जो मेजोरिटी का डिसीजन है वो वहाँ पे पास किया जाता है। So decision is always taken with the consultation and the consent of all those who are affected by the decision. Democracy is the principle that can be applied on any sphere of life. तो डेमोक्रेसी एक ऐसे प्रिंसिपल है जो हर एक जगह अप्लाई होती है। यहाँ पे नहीं है कि हम सिर्फ कंट्री के ऊपर ही से अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक जगह पे अप्लाई होता है। जैसे फैमिली के अंदर, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स है, ज्वाइंट फैमिली है या सिंगल फैमिली है, तो वहाँ पे कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है, सबसे कंसल्टेशन किया जाता है, सबसे बातचीत की जाती है। उसके बाद में जो एल्डर मेंबर होता है फैमिली का, वो डिसीजन लेते हैं, जैसे ग्रैंडफादर है या फादर है। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है यहाँ पे भी अप्लाई करता है और ये दूसरी जगह भी अप्लाई करता है, जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन meetings are taken, and in that meeting various decisions are taken. The topics are discussed with various employees of the company. जो बहुत सारे एम्प्लॉयज है कंपनी के, जो स्टाफ है, उनसे डिस्कस किया जाता है कोई टॉपिक। उसके बाद में उनकी भी राय ली जाती है और मैनेजमेंट रिसर्च होता है, वो अपनी राय भी रखते हैं। उसके बाद में कंसल्टेशन के बाद में सबकी मर्जी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये कैसा सिस्टम है, ये भी एक कैसा तरीका है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जैसे डिसीजन लिए जाते हैं उसी के यहाँ पे भी डिसीजन लिए जाते हैं। सो इट इज अप्लाइड ऑन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। होप दैट you have understood this chapter. Thank you.